हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आई होप मैंने जो आज वीडियो भेजा है सेकेंड पार्ट कल कराया गया था वो आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हमने स्टडी किया सबसे पहला द इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द ब्लड दैट इज प्लाज्मा विच फॉर्म्स 55% ऑफ द ब्लड ऑफ द टोटल ब्लड। प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा, प्लाज्मा के मेन प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा। देन आई एक्सप्लेन यू दैट how the red blood cells, that is the formed element of the bloods, RBCs, WBCs and platelets, how they are produced in the red bone marrow of the thigh bone, right? So let us study the three blood cells, that is the three blood corpuscles in detail. The सबसे पहला blood corpuscle which we are going to study is RBCs. We call it as red blood corpuscles or red blood cells, which are also known as erythrocytes. What they are also known as erythrocytes. Now, as we know that erythrocytes are biconcave in shape. We have studied this when you take their section. They are biconcave in shape. Due to this biconcavity, they can pass through any artery or vein, that is they can pass through any blood vessel with a smaller diameter. Okay. Then these are anucleated cells. कल हमने पढ़ा है या जो वीडियो में हमने पढ़ा है इसके प्रीवियस वीडियो में, that the RBCs जो प्रोड्यूस होते हैं they are produced from the reticulocytes, that is anucleated cells, right? Nucleus is absent in them, so that internally they can form a conjugate protein, that is hemoglobin. Even the RBCs are without any organelles also. The cell organelles like mitochondria is also absent in them. Nucleus is absent in them. Can you just think that why? Okay, nucleus is absent, we can understand that there is a large space occupied by the hemoglobin inside the RBCs. Why the mitochondria is not present in the RBCs? अगर ये RBCs है, ये है उसके अंदर का hemoglobin. Nucleus is absent, and why the mitochondria is not there? The major reason is, and the very simple answer is, hemoglobin binds with oxygen. Oxygen is used by the mitochondria to produce energy. If RBCs would have mitochondria, all the oxygen would be used by the same cells, by the RBCs only, their mitochondria only, to produce energy, and they wouldn't sell or they wouldn't transport oxygen to other cells, or even if they would transport, the transportation of the oxygen to the other cell would reduce. समझे? That is why RBCs does not have mitochondria. हमने respiration chapter पढ़ा है, तो I hope you have understood how mitochondria have been producing energy during aerobic respiration. The next thing is that what is the normal range or the number of RBCs present in the adult human body? So on an average 5 to 5.5 millions of RBCs are present per cubic millimeter of blood. हमने पढ़ा है रेगुलर लेक्चर में, RBCs are present in millions, platelets are present in lakhs, and WBCs are present in thousands. So RBCs are the highest number of blood cells present in the plasma, because of which the blood becomes dense. Okay. Next, when the number of RBCs decreases than the normal, means minimum कितने होने चाहिए 5 million, maximum कितने होने चाहिए 5.5 million. When the number of RBC is less than the normal requirement or than the normal count, that condition is called erythrocytopenia. Erythrocytopenia means decrease in the number of RBCs than the normal count. That leads to the condition called anemia. RBCs कम है मतलब हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब तुम कितना भी ब्रीद इन करके या डायरेक्टली ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के भी अगर ऑक्सीजन लंग्स में ले रहे हो, लंग्स में से उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी सेल्स के पास कौन ट्रांसपोर्ट करता है? hemoglobin of the RBCs. So when the RBCs are less, the absorption and transportation of oxygen to the body will decrease. Body cells को oxygen कम मिलेगा, तो respiration, that is energy production, will be less. The person will feel tired, weak, giddiness. एक दो स्टेप भी चढ़े
they feel tired, they feel breathless. So these all are the symptoms of anemia due to erythrocytopenia, decreased count of RBCs than the normal count. Okay. On the other hand, if the number of RBCs increases than the normal count, that is called polycythemia. Polycythemia means increased number of RBCs than the normal count. मैक्सिमम कितने होना चाहिए? 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, लेकिन इससे भी ज्यादा अगर नंबर ऑफ आरबीसीज बढ़ रहे हैं. डिड वी स्टडी HDN, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता है. मतलब उधर जो न्यूबॉर्न बेबी है उसमें वो मदर के एंटीबॉडीज की वजह से बेबी के आरबीसीज डिस्ट्रॉय होते हैं, तो बेबी उसके बदले और आरबीसीज प्रोड्यूस करता है. So baby that time is suffering from polycythemia. Are you getting that? Increased number of RBCs than the normal count. That leads to clotting of blood unnecessarily. The clotting कब होना चाहिए blood का? Simple है. ये है suppose blood vessel जिसमें से blood flow हो रहा है. अब suppose there is any cut or injury and blood starts flowing out of the blood vessel. Then what takes place? Clotting takes place to stop the leakage of the blood. In simple language, right? अब जब polycythemia है, मतलब number of RBCs in the blood are increasing, that causes pressure on the arteries and arteries may rupture or break. Not arteries but the capillaries, due to excessive pressure of the increasing RBCs will break, and when these capillaries will break, immediately the clotting will go on. Are you getting that? So that leads to the clotting. अब polycythemia dangerous कब है? सपोज कोई आर्टरी या कैपिलरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रहा है, जो किडनी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, अगर उसमें पॉलीसाइथेमिया की वजह से क्लॉट्स बन गए तो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा. अगेन दीज ऑर्गन्स विल गेट प्रेशराइज्ड ड्यू टू द स्टॉपेज ऑफ द ब्लड फ्लो. सो दैट कैन लीड टू डेथ ऑल्सो. समझे? तो डिक्रीज नंबर भी इट्स नॉट गुड फॉर द हेल्थ. इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसीज इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर द हेल्थ. That is why the number of RBCs should be maintained to the required count. Next thing, we are talking that RBCs consist of a red colored pigment that is nothing but a conjugate protein. What do you mean by conjugate protein? Along with amino acids, it has non-proteinaceous substance that is iron. मतलब अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाते हैं, उसके साथ मेटल भी है, आयरन. दैट इज इट इज नॉट कॉल्ड ओनली प्रोटीन, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट प्रोटीन. सो दिस आयरन कंटेनिंग प्रोटीन present in the RBCs is hemoglobin, which has a very important role in transportation of oxygen from lungs to the tissues and reverse transport of carbon dioxide from tissues to the lungs. Okay. Now, what is the average amount of hemoglobin should be present in the adult body? It should be 12 to 16 gram per deciliter of blood. Deciliter means 100 ml of blood. समझ में आया? Deciliter means per 100 ml of blood there should be 12 to 16 gram of hemoglobin. Now in case of adult male and in case of adult female. In case of adult male, the average proportion of hemoglobin per deciliter of blood, again deciliter means 100 ml of blood, is 13.5 to 17.5 gram per deciliter of blood. That is per 100 ml of blood. The same in female is adult female, the average proportion of hemoglobin is 12 to 15.5 gram per deciliter of blood. Now here in females, if you see here, is the proportion of hemoglobin less as compared to the adult male. In adult female, the proportion of hemoglobin is less as compared to male. Why is this so? Can you think about the reason? The reason is very simple. The adult females undergoes menstrual cycle. In the menstrual cycle, one of the phase is, we have studied it, one of the phase is bleeding phase. So due to the bleeding phase,
from the female body, some amount of blood is lost once in every month. Once means 4 to 5 days वो blood loss होता है. I have taught you in the regular lecture recently, minimum 45 ml या maximum 100 ml तक blood female की body में से lose होता है. That is why their hemoglobin content as compared to male is slight less. Okay, समझे? So this was all about the RBC's structure and function, even some disorders related to RBCs. Now the next point under RBC, what we are going to study is where is the erythropoiesis takes place. जो हमने previous video में ही पढ़ा है, if you have seen. Erythropoiesis, that is formation of RBCs, takes place in red bone marrow, but due to the stimulation of the hormone from the kidney, that is erythropoietin. The hormone from the kidney, erythropoietin, stimulates the red bone marrow of the thigh bone, that is femur, because of which erythropoiesis, that is formation of RBCs, takes place. Then, what is the lifespan of RBCs? Once the new RBC is formed, what is its lifespan? वो कितने दिन तक live रहता है, survive करता है? That is 120 days. After 120 days, that RBC is old and worn out, or sometimes due to any internal or external factors, the RBCs may get damaged also. So such damaged, worn out or old RBCs are destroyed in which organ of the body? They are destroyed in the spleen. Spleen में trabeculae होते हैं. If you remember, I have taught you liver का anatomy. Did I teach you this hexagonal lobules, hepatic lobules having hepatic cords, which are called as hepatic trabeculae. In between these are blood sinuses. Blood sinuses are special cells in the liver, Kupffer cells. So RBCs are destroyed in the trabeculae of the spleen. Trabeculae मतलब spleen का भी जब anatomy देखोगे अंदर से ऐसे trabeculae है, which are called splenic cords. जैसे हम इसको hepatic cords बोलते हैं. Okay. So spleen, that is trabeculae of the spleen, is the graveyard of RBCs. Graveyard means स्मशान भूमि जिसको हम बोलते हैं, मीन्स यहाँ पे जाके मरते हैं ना, दफनाए जाते हैं या डिस्ट्रॉय होते हैं RBCs. Okay. But other than that, Kupffer cells of the liver also help in destruction of RBCs. But majority destruction is done by spleen's trabeculae. Hence, the main graveyard of RBC is spleen trabeculae. Liver cells, Kupffer cells also help in that. समझे? Okay. So students, here we are done with the first formed element of the blood, that is RBC, is known as erythrocytes. The next second type of blood cells we will be studying are WBCs, which are also known as leukocytes. Now leukocytes जो हमने पढ़ा है regular lecture में are of two types, granulocytes and agranulocytes. This is a WBC and this is its nucleus. This is another WBC and this is its nucleus. The surrounding fluid is cytoplasm, right? Sorry. So this WBC is called granulocytes because its cytoplasm shows fine particles called as granules. Here, granules in the cytoplasm are absent, hence it is agranulocytes. Subject. Granulocytes are further divided into three types on the basis of the stain with which the nucleus gets stained. And agranulocytes are again of two types, not on the basis of stain. So let me explain you the types of WBCs. That is the types of granulocytes first and then the types of agranulocytes. Okay students, so this is all about WBCs, that is white blood cells, which are also called as leukocytes. Now sometimes
when you search it on Google, here LEUKOCYTS ऐसा भी स्पेलिंग होता है या COCY भी होता है, so it depends. ओके, बुक में जो है स्पेलिंग वो रेफर करो. अब ल्यूकोसाइट्स, WBCs का व्हाट इज द नॉर्मल काउंट इन द ब्लड? इट इज 6000 to 8000 WBCs per cubic millimeter of blood. So what is the normal count of WBCs? 6000 to 8000 per cubic millimeter of blood. These all are nucleated cells. हमने RBCs में पढ़ा था, they are anucleated cells. WBCs are nucleated cells and they don't have a particular fixed shape. They are amoeboid in shape. That is why they can come out of the blood vessel that is called diapedesis. From the capillaries, we know this is the capillaries which has a small porous walls, right? The capillary walls have small holes. When the blood flows from the capillaries, only the plasma can ooze out from these holes, can come out from these holes. Platelets, RBCs, WBCs shouldn't come out. But as WBCs are amoeboid in shape, they can turn into any shape. Being amoeboid, they can come out of these, come out of the capillary walls. That phenomenon is called diapedesis. Okay. Next, what is their lifespan? If we talk about the lifespan of the WBCs, it is from few days to few months. There is no definite lifespan like RBCs. RBCs में कैसे कोई भी नया सेल प्रोड्यूस होता है तो 120 डेज के लिए वो सर्वाइव करता है, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ओके, बट WBCs डिपेंड करता है, क्योंकि WBCs का मेन फंक्शन क्या है? दे गिव अस इम्यून सिस्टम. कोई भी फॉरेन पार्टिकल विच इज हार्मफुल टू अवर बॉडी सेल सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, एनी केमिकल, जैसे ही बॉडी सेल्स में एंटर करता है या बॉडी में एंटर करता है, WBCs इमीडिएटली अटैक ऑन देम. आइदर WBCs उनको स्पेशल केमिकल प्रोड्यूस करके किल करते हैं या WBCs को फैगोसाइट करते हैं. फैगोसाइट मतलब निगल लेते हैं एंड मार डालते हैं. समझ में आए? सो जब WBCs हमारी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, दैट टाइम दे इटसेल्फ आल्सो गेट्स डिस्ट्रॉयड. सामने वाले को मारते मारते खुद भी शहीद हो जाते हैं. समझ में आया? सिंपल लैंग्वेज में. दैट इज व्हाई फ्यू डेज टू फ्यू मंथ्स, मतलब इन्फेक्शन में अगर कोई WBC इन्वॉल्व नहीं है, दैट विल सर्वाइव फॉर फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स. बट इट कैन बी कि बोन मैरो से प्रोड्यूस हुआ, मैच्योर हुआ, इमीडिएटली इन्फेक्शन हुआ, इन्वॉल्व हो गया रिएक्शन में, डिस्ट्रॉय भी हो गया. समझे? सो WBC का लाइफ स्पैन is not a definite lifespan. We just can write from few days to few months they can survive. Okay. The next thing, हमने RBCs में कंडीशन पढ़े थे, इंक्रीज हुआ तो क्या बोलते हैं, डिक्रीज हुआ तो क्या बोलते हैं. The same way, when the WBCs are increased than the normal number, that is called leukocytosis. That is increase in the number of WBCs than the normal count. Normally there should be 8000. इससे ज्यादा काउंट जा रहा है, मतलब WBCs are increasing number than the normal count. And ये स्पेशली ड्यूरिंग इन्फेक्शन या एलर्जिक कंडीशन में होता है, क्योंकि इन्फेक्शन मीन्स बॉडी में बैक्टीरिया वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मारने के लिए WBCs भी और मल्टीप्लाई हो रहे हैं. समझ में आया? मीन्स दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर. सेकेंड इज ल्यूकेमिया. It is the clinical abnormal increase in the WBCs. मतलब ल्यूकोसाइटोसिस में भी WBCs इंक्रीज हो रहे हैं, बट ड्यू टू इन्फेक्शन और एलर्जीज. बट इन ल्यूकेमिया द नंबर ऑफ WBCs increases in a very great quantity because of the blood cancer. समझे? तो दोनों भी इंक्रीज इन द WBCs है, बट दिस इज ड्यू टू इन्फेक्शन और एलर्जी. हियर इट इज ड्यू टू कैंसरस ग्रोथ ऑफ द सेल. अब WBCs जितना बढ़ेंगे अच्छा है ना, क्योंकि WBCs तो फॉरेन पार्टिकल्स को मारते हैं. नहीं, ऐसा नहीं. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. वी शुड ऐड सॉल्ट इन द फूड. खाने में फूड में सॉल्ट है तो इट्स गुड, राइट? इसका मतलब ये है क्या तुम पूरा डिब्बा ही डाल देते हो? नहीं. कोई भी चीज जो बॉडी के लिए हेल्दी है, अच्छी है, दैट डजंट मीन कि वो जरूरत से ज्यादा बढ़े. हमारी बॉडी का एक प्रॉपर फिगर है, वॉल्यूम है, जिसमें हर चीज के लिए एक लिमिटेड स्पेस है. अगर ये WBC जरूरत से ज्यादा बढ़ेंगे तो यहाँ पे वो ट्यूमर्स में कन्वर्ट हो गया. आई टोल्ड यू, गांठ बन जाते हैं ये इंक्रीज सेल के, दैट इज कॉल्ड ट्यूमर इन कैंसर, राइट? तो वो ट्यूमर जितना बढ़ेगा, अंदर की स्पेस कम है, इट विल बर्स्ट, इंटरनल कैपिलरीज एंड ऑल विल ब्रेक,
internal injury will take place and that can lead to death. समझे? Okay. अब ये तो हो गया about increase in the number of WBCs. Now what is the decrease in the number of WBCs called as? Leukocytopenia. That is decrease in the number of WBCs. समझ में आया? ये भी होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन और एलर्जी. देखो मैंने बोला पहले WBCs मल्टीप्लाई होते हैं, जाके फॉरेन पार्टिकल्स पे अटैक करते हैं, उनको मारते मारते खुद भी मर जाते हैं, तो वापस नंबर विल डिक्रीज ऑल्सो. सो इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इन्फेक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिजीज कि आइदर ल्यूकोसाइटोसिस होगा या ल्यूकोसाइटोपीनिया होगा. समझे? ओके. सो दिस वाज अबाउट. सो वी स्टडीड फ्यू टर्म्स. हमने एक और टर्म पढ़ा अभी वहां पे, डायपेडेसिस. व्हाट इज डायपेडेसिस? The WBCs can escape out of the pores of the capillary walls and they can circulate into the lymph. Okay, so this was about the general introduction of WBCs. Now the white blood cells, that is the leukocytes, are mainly of two types, which I told you, based on the presence of granules in the cytoplasm. They are called granulocytes, and when the granules are absent in the cytoplasm, they are called agranulocytes. ये जो shaded regions दिखाया है मैंने, वो है न्यूक्लियस. स्टूडेंट्स ऐसे के ऐसे टेबल अपने बुक में कॉपी कर लो. मैंने ये लेसन में बिगिनिंग से भी जब भी पढ़ाया है. एवरीथिंग आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड. आई डोंट रिमेम्बर आई हैव सेंट यू पीपीटी और नॉट. जस्ट वन ऑफ यू टेल मी, मैंने ये लेसन का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तुमको ग्रुप पे भेजा है कि नहीं. उसमें भी सब है ये, बट स्टिल अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये जो मैंने टेबल्स बनाए हैं, वो पता नहीं जब मैं कंप्यूटर पे देखती हूँ तो करेक्ट दिखता है, लेकिन जब मैं मोबाइल में अपलोड करती हूँ तो ये एरो इधर है, ये मटेरियल उधर सरक गया है. सो समथिंग इज देयर. इसीलिए जब तुम पीपीटी फॉलो कर रहे हो टू कंप्लीट योर नोट्स, एट द सेम टाइम वीडियो में से भी देख लो, सो योर कंफ्यूजन विल बी अवॉइडेड. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will study the type of WBC, that is granulocytes. What are granulocytes? These are the white blood cells in which the cytoplasm consists of the small granules. On the basis of the stain with which they get stained, the stain with which the nucleus of the cells gets stained, they are called as, they are of three types: neutrophils, eosinophils and basophils. उसके ऊपर मैंने हर एक का डायग्राम भी निकाला है. तो सबसे पहले we'll talk about neutrophils. Neutral means acid and base reacts to produce neutral substances. अब यहाँ पे neutrophils are the kind of WBCs which get stained with acidic stain as well as basic stain. Stain means what? A coloring liquid which gives color to the cytoplasm or to the nucleus, so we can see the internal structure of the cells clearly. Okay, so neutrophils get stained with acidic stain as well as basic stain, so they are called neutrophils. What is the proportion of neutrophils? Out of 6,000 to 8,000, the neutrophils comprises of 60 to 65% of the total WBCs. आगे का देखो, eosinophils है 2 to 3%, बेसोफिल्स है ओनली 0.5 to 1%. सबसे कम WBC हमारे ब्लड में जो होते हैं वो है बेसोफिल्स. उससे थोड़े ज्यादा है इओसिनोफिल्स, उससे थोड़े ज्यादा है मोनोसाइट्स 6%, उससे थोड़े ज्यादा है लिम्फोसाइट्स 20 to 25%, and highest number is of neutrophils. So which WBCs forms the major part of the WBCs in the blood? Neutrophils. Which WBCs forms the minor part of the WBCs in the blood? Basophils. समझे? Okay, this proportions you have to remember. अब let us talk about the nucleus of the neutrophils. If you see the neutrophils, obviously they are granulocytes, so the cytoplasm is having small particles, that is granules, but the nucleus is 2 to 5 lobed nucleus. You can see here. Okay, I have not written, I think. Here their nucleus is 2 to 5 lobed. Can you see the lobes of the nucleus here? ये single nucleus है, but it is divided into many lobes. Okay. Next, they are phagocytic in nature. मैंने अभी बताया phagocytosis means they engulf the foreign particles. जैसे कि अगर ये न्यूट्रोफिल है, उसके बाजू में कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, it will do endocytosis. ये पार्टिकल को अंदर पुश करेंगे, again it will do further endocytosis, and the particle will reach in and they will
digest it with the help of powerful enzymes present inside them. समझे? So their function is they perform phagocytosis to kill or destroy the foreign particles. Here foreign particles mostly are bacteria and viruses. Next, they are antimicrobial in action. Obviously वो microorganisms को खा लेते, so they act against the microorganism. That is antimicrobial in action. Next, they are the first type of WBCs which reach at the site of infection. मतलब जैसे ही बॉडी में इन्फेक्शन होता है सबसे पहले उस इन्फेक्शियस एजेंट को, फिर वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सबसे पहले कौन से WBCs पहुंचते हैं एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन? न्यूट्रोफिल्स. एंड दैट इज व्हाई दे आर मोर इन नंबर आल्सो. Are you getting that? So this is about the functions of the neutrophils. They get stained with acidic and basic stain and they have 2 to 5 lobed nucleus. मैंने यहाँ पे मिनिमम एवरेज दिखाया है 3. मिनिमम 2 लोब्स होते हैं, मैक्सिमम 5 लोब्स होते हैं. अब सेकेंड टाइप आर eosinophils. Eosinophils are, what is their proportion in the blood? 2 to 3%. Out of 8,000 WBCs, 2 to 3% WBCs are eosinophils. Eosinophils get stained with acidic stain. That is why they are also called as acidophils. वो कौन से स्टेन से स्टेन होते हैं? कलर्ड हो जाते हैं, so that we can see them clearly in the microscope. Acidic stain से. So eosinophils are also called as acidophils. Their nucleus is bilobed. If you see here, are there 2 lobes? Okay. Now let us talk about their function. They resist infection and are associated with allergic reaction. किसी किसी को एलर्जी होती है, डस्ट की एलर्जी होती है. मतलब सी, obviously whenever we breathe, whenever we talk, the air along with the dust particles enter in our body, but our immune system is stronger, so we don't get allergy with that. There are some people whose immune system is weak, so due to allergic reactions, due to entry of foreign particles, they immediately start sneezing, coughing and all. तो ऐसे allergic reactions के साथ डील कौन से सेल्स करते हैं? Eosinophils, the type of WBCs. And they try to resist the infection. Obviously कोई भी WBC हो वो immune response देता है हमारा, means try to protect the body from any kind of infection, that is resist the infection. Next, parasitic infections of the worms के against ये बहुत strongly react करते हैं. Now what is parasitic infections? Long back जब मैं ये topic बहुत साल पहले पढ़ रही थी, so I just wanted to see the video on the YouTube. Just have a video on the YouTube. एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन वीडियो थ्रू रिकॉर्ड किया है इसका. वेरी नाइस वीडियो टू सी दैट. एग्जैक्टली वीडियो को क्या नाम दे, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट जस्ट टाइप एक्शन ऑफ eosinophils फॉर पैरासाइटिक इन्फेक्शन ऑफ वर्म्स. हाँ, ऐसा टाइप करो, मे बी यू विल गेट टू सी दैट वीडियो. ऐसा एक सेल दिखाया है, बॉडी का सेल, जिसके अंदर वर्म एंटर हो चुका है. यू नो एस्कैरिस, फिलारिया, दीज आर द वर्म्स विच एंटर्स इन आवर बॉडी, राइट. अब इमीडिएटली सारे WBCs कौन से? eosinophils ये सेल के अंदर घुसे हैं एंड ये वर्म के अराउंड गैदर हो गए हैं, एंड कैसे वो वर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दैट इज अ वेरी नाइस वीडियो टू सी. इफ यू विश टू सी, जस्ट टाइप इट ऑन द यूट्यूब, यू विल गेट इट. नेक्स्ट, the hydrolytic enzymes and the peroxidase present in their cytoplasm. The hydrolytic enzymes and the peroxidase हमने पढ़ा है microbodies. The peroxidase present in the cytoplasm destroys the antigens. Antigen is nothing but the virus or bacteria. Okay, see, any bacteria, suppose this is the bacterial cell or this is the viral cell, has special proteins on their surface. जैसे हमने RBCs के surface पे proteins पढ़े हैं, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन डी, राइट. वैसे ही बैक्टीरिया एंड वायरल सेल के सरफेस पे भी स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं. दीज आर कॉल्ड एंटीजेंस ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरसेस. तो हमारे जो WBCs है वो बैक्टीरिया को एंड वायरस को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब उनके एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं. अल्टीमेटली बैक्टीरिया वायरस भी अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है. समझे? सो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एंड द पेरोक्सिडेज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ दीज सेल्स डिस्ट्रॉयज द एंटीजन on the membranes of bacteria or viruses. Okay, next type of WBC is basophils. Basophils का proportion only 0.5, मतलब very rarely we get to see it in the blood. 0.5 or only 1% of basophils are there. Obviously basophil means they are stained with basic stain. Okay, their function, they secretes 3 chemicals: histamine,
serotonin and heparin. Serotonin and heparin acts as anticoagulants. Yes, they prevents the clotting of blood when the blood is flowing inside the vessels. अगर वेसल्स में से ब्लड बाहर आने लगा रप्चर होने की वजह से या लीकेज की वजह से, तभी क्लॉटिंग होना चाहिए. जब ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लो हो रहा है, there shouldn't be clotting, वरना ब्लड फ्लो ब्लॉक हो जाएगा. So serotonin and heparin acts as anticoagulants. Histamine has this role, inflammatory reaction. What is inflammation? Very simple. एक नॉर्मल सा स्क्रैच भी आ गया अगर हमारे स्किन पे, तो यहाँ पे सेल्स, वहां का स्किन जो है थोड़ा सूज जाता है, स्वेल हो जाता है. क्यों? जहां पे भी टिश्यू इंज्योर होता है वहां पे हिस्टामाइन प्रोड्यूस होता है. हिस्टामाइन अट्रैक्ट्स मोर ब्लड देयर. वो एरिया में फिर ब्लड फ्लो ज्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ब्लड में फिर ये वाले जो WBCs है वो ओपन हो गया, वहां पे एयर का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर घुस सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है. तो वहां पे जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ये न्यूट्रोफिल्स, एसिडोफिल्स, इवन दीज टू कैन डिस्ट्रॉय दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म and can prevent further infection. So inflammation means the immediate response of the tissue when they get injured by producing histamine. Histamine contracts more blood at the injured area. समझे? So students, today we studied the types of granulocytes. Let us continue with the agranulocytes. Agranulocytes are of two types, lymphocytes and monocytes. If you see monocytes, they are 6% of the total WBCs. Their nucleus is kidney shaped or bean shaped and they have a function of phagocytosis. Means neutrophils and monocytes are phagocytic in nature. They directly eat up, they directly engulf the bacteria and viruses and destroy them. Lymphocytes gives the immune response. They are 20 to 25% of the total WBCs. कल मैंने पढ़ाया lymphocytes are of two types, T lymphocytes and B lymphocytes, and they are the main cells to give immunity to us, to resist our body from getting any infection. ये वाला जो इसका पार्ट है ये हम डिटेल में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस चैप्टर में पढ़ेंगे. T lymphocytes gives us cell mediated immunity and B lymphocytes gives us antibody mediated immunity. ये क्या है? In short, I will explain you in the next video. Why T lymphocyte forms in the bone marrow but matures in the thymus gland. Why B lymphocytes forms as well as gets matured in the bone marrow, spleen and lymph nodes. समझे? ये दोनों का जो immune response है short में I will explain you in the next video. Today we will stop here. जितना भी मैंने पढ़ाया है I hope you are completing your notes. Thank you.